Hello, hi everyone. Kim Cho Bra. Hope so. You all are doing well, doing good. First of all, this is not, we can say, a pre-planned live session. This is simply a surprisingly with one of the teacher with us, one of the educator with us. Okay, Pamni ji is with us. Let's call her. Okay, everyone, hi. Oh, hi everyone. કેમ છો? બધા મજામાં? હોપ સો તમે બધા જ એકદમ સ્વસ્થ હશો અને બધા એકદમ જેને કહી શકાય ખુશ હશો. Oh, here. We are having Pavneet ji with us. How was you, ma'am? हेलो रितेश। Okay. Am I audible? क्या आप मेरे को ठीक से सुन पा रहे हो? दोस्त Okay. तो विद इन मिनट और 2 मिनट हमारे साथ में सब लोग जुड़ जाएंगे. जो भी हमारे साथ में आज जुड़ेंगे उनको भी ऐसा लगेगा कि सरप्राइजिंगली हाउ कम. So we are having with us Pamit ma'am. She is a well-known, we can say, educator, and we all know her क्योंकि कहीं ना कहीं कितनी सारी स्कूल्स में हम उनसे रूबरू हो चुके होंगे. उनका बहुत ही अच्छा ग्राफ आज तक का रहा है. बहुत सारी स्कूल्स में कोई ना कोई तो उनके मतलब उनके साथ में मिल चुका होगा उनको. तो वी आर हैविंग पवनीत जी. विद इन 2 to 3 मिनट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. यूजर सब लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे and we would have a नो fruitful talk about life of Pavneet ma'am and about the current situation also. ओके नाइस वी विल डू इट। Okay. કેમ છો બધા all are getting joined here. બધા join થાય છે આપણી જોડે. And ma'am, English, Hindi. થોડી થોડી આવડે છે, થોડી થોડીને। आई एम 25 years now in गुजरात, तो એટલી ગુજરાતી આવડે છે કે હું વાત કરી શકું છું, બાકી તમે સમજી Okay. લેજો। No, English Okay. Hindi is good with me. Sometimes, yeah, I'll try Gujarati. I don't want to नहीं है, थोड़ा बहुत तो बोलना चाहिए, इसलिए I try somehow. Okay. So we will go the beach में गुजरात. हाँ, बिल्कुल चलेगा। Okay. चलो let's होते रहेंगे हमारे साथ में जॉइन होते ही रहेंगे everyone. Once again, welcome to all. Let's start with Pamit ma'am here. She is and she is an educator. Okay, chalo, let's start with that. What educator means and about your life, about your journey, about your academic and everything. Let's start with it. आपका introduction in short. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी या आगे जाके प्रिंसिपल बनूंगी। हमेशा स्कूल में डांट ही खाती रही हूँ टीचर्स की, जैसे मैं डांटती हूँ बच्चों को अभी। तो लाइक इट वाज लाइक ओ आई डोंट वांट टू गो इनटू द प्रोफेशन, बट आई डोंट नो हाउ सडनली गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। तो उन्होंने भगवान ने मेरे अंदर डाल दिया कि नहीं, आपको टीचर बनना है और आपको आगे बच्चों को पढ़ाना है। एंड somehow I came into the field of education. Mainly my mother-in-law's hand is there in this. मम्मी जी हमेशा मुझे बोलते थे कि नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही है।
तो I would think like नहीं मुझे ना corporate field में जाना है, it was very exciting and all. Then she said no बेटा, try a noble profession. I said okay, wow, let me check it out how noble it is. तो बस education field में आई and I fell in love with education, with my students, और आज मैं और education, we are a part of each other, we cannot get separated. ओके, तो फर्स्टली एजुकेशन के बारे में बात करें, पहले आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, अबाउट योर फैमिली और अबाउट योर चाइल्डहुड आल्सो। Childhood very exciting. सबसे बड़ी बेटी हूँ मैं, हम चारों बेटियां हैं और as my name is Bhavni, all used to call me Bhau. You know, in Maharashtra, Bhau means brother, right? ब्रदर, तो ब्रदर, सब यस। मुझे भाऊ बोलते थे, तो मुझे भवनी तो बोलता नहीं था, तो I was the भाऊ। Are we connected? I can see something trying to reconnect. Yes, we are back. So being a brother, like person, you have to be much in control of things and all. So I would be a brother to everyone. I would take care of them as a brother. Then slowly and steadily, I found no, 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 this is not the situation. You are a girl, you have to get married. All right, fine, come back from the dreams. And I did. I got married in Jamnagar. Nobody thought कि भाई जामनगर कैसे पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, पहुंच गए जामनगर. Do you know Jamnagar? We used to call it Jamnagar. I'm sorry to Bapu Shri Jam Sahib, but we didn't know कि भाई Jam Sahib is the real name, thing for Jamnagar. And connected after getting connected to Satya Sai Vidyalaya, Shri Satya Sai Vidyalaya, I really thank Tyagi ma'am for that. That I got connected to the school, and with that connection, I built a connection with Jamnagar. The real Jamnagar I found after going to Sri Satya Sai Vidyalaya. I really thank her from the bottom of my heart. So got married here, being in a nuclear family and a bhau of the house. Suddenly, bahu, and I would be like this all the time. Today also you may see me sometimes like this, and it was difficult, of course. Easy you can एकदम bindas type of person suddenly coming into such a situation. Okay, maybe God had his own plans. And then one fine day, मम्मी जी ने कहा चलो चलो घर पे नहीं बैठना है, क्या करना है, you think now. I was like क्या करूं? Then she told go into teaching, it's a very good profession. ठीक है भाई, as I told you, back to the thing, I came into education. ओके, बचपन अच्छा रहा. ओके। तो चलिए अब ये बताइए कि कौन कौन सी स्कूल में आप अब तक यू आर यू वेर एंड यू आर नाउ एज एन टीचर और प्रिंसिपल, और मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है आपने जो की है, बट इट इज रियली वी कैन से कि यू हैव ऑलमोस्ट कंकर्ड एवरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, वी कैन से बहुत सारे स्कूल में आपने सर्विस दी हुई है, तो उसके बारे में पहले बताइए कि व्हाट अबाउट फ्रॉम यू स्टार्टेड विद टीचर एंड आफ्टर प्रिंसिपल, एंड मतलब वो जो जर्नी है वो थोड़ा सा बताइए। You can call it a metamorphosis, you know, जैसे वो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है ना, पहले एक एग है, उसके बाद वो प्यूपा है, फिर ककून, then in the cup suddenly when it broke and it found that it has wings and it flew into the sky. Not the sky, but little low. I'm not into the sky yet. I don't want to go also. मुझे अपने roots जमीन पे ही रखने हैं. But yes, it was a metamorphosis. I started with a pre-primary teacher, assistant teacher to a pre-primary school. You can imagine.
So that LKG children, ma'am, wale se lekar, and then slowly I built up. But due to my height, they used to get scared कि oh इतनी बड़ी मैम, वो तो छोटे छोटे मैम्स होते हैं ना वहाँ पे LKG UKG में. But still I built a rapport with them. Some of them really loved me. Some of them were very scared of me. But slowly and steadily, the journey started from there. After I completed my post graduation, I joined first Xavier School. There I used to go as a proxy teacher to be on sick leave or something, and father used to call me. And he wanted me to join, but that time little bit problem was there, so I was not able to. Secondly, I got a call from St. Mary's, where I joined as a principal, and directly as a principal. There were ups and downs, like the ECG thing goes, na? Dig, 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 dig. That's how the journey was. So St. Mary's, 3.5 years. As I joined there, my son was hardly 3 months old. I used to leave this 3 month old child at home with my mom in law, who supported me a lot. I really respect her, and I cannot forget what she has done for me. And from there, from that 3 month old baby in St. Mary's, when I went to 3.5 years old when he became, and like I worked there in St. Mary's. But again, I got a call from Haria School, and I joined there again. So that was a different scenario altogether, because in St. Mary's we had children from all spheres of life. There were children of butchers, there were children of vegetable sellers, there were children of industrialists, all kind of children. And bit it was difficult, as I had just like started learning Gujarati. I didn't know there is a difference between chopri and chopra. I used to tell the PN, मुझे ना चोपड़ी ला दो, तो she used to bring textbooks. I said नहीं नहीं, ये नहीं, वो जो मोटा वाला होता है. मैम मैंने चोपड़ा कहवाय, चोपड़ी ना कहवाय. Okay, fine. Just get me those. So little bit I was learning Gujarati. Suddenly there's this group of people who would come to my office and start speaking in another alien language. And then I go home and ask my husband that what is this. He said it is Kachi. You don't know, na, Kachi language. Oh God, another language there is. Oh my God, how will I manage with the parents now? Then I managed that they speak in Hindi. आपको हिंदी नहीं आता है, आपको कच्ची नहीं आता है, अच्छा हम हिंदी में बोलता है. And somehow like we used to have a conversation. It was a bit tough, but we managed somehow. And you won't imagine those 3.5 years in St. Mary were hating me. Of that 3.5 years, they love me a lot. Today I'm in one of the groups, reunion groups. They call me for the reunions and they are like, ma'am, you made our life. You were so like get angry on you कि मैम क्या है हमेशा हम लोग को. So बेटा आपकी लाइफ बन गई ना, then I am happy. What is a vegetable seller? I am asking, ma'am, you didn't recognize me, na? I said, beta, with your beard and your cap on your head, how can I? He told, ma'am, I'm your student from St. Mary's. Ah, that made me a proud person, that a vegetable seller speaking fluently in English. I am very much thankful to God that yes, I made a difference, a small difference in the children's life. Okay. So that was Haria. And after Haria, where? Kहाँ? After Haria, Gregorius School. Gregorius School, 1 year I did because my mama had passed away that time. So sister had to get married. I only had to get her married here in Jamnagar. We got her married. So I had to leave. There were some personal problems associated with that. So I had to leave. And then as I left, I got again in Xavier School. So I was like, Father, it was a temporary job. He said, you don't have to sign even. You just come to school, take your lectures and go.
I said, Father, that's not possible for me. You know how it will look. He said, no, but that is the rule. You have to do that. I said, okay, finally, you have to work. Now you can't just sit at home. I said, no issues, Father. I'll do that. And these Xavierites boys were literally, I thought Haria school only has that this thing tag that yes, the boys are all of industrialists and they were very, very naughty. One of them, I literally hit him with a scooter once. And then these Xavierites also got it from me nicely. Father said, "Jao, ek do laga do, koi farak nahi padta hai." So today when I meet them, na, they are one of the marriages. I met one the student. He just kept his hand on his face in this manner. I said, "Beta, why are you doing this?" तो मैम मुझे आपका झापड़ याद है आपने मुझे जब लगाया I said, no, no, now you're getting married. Don't give me that type of this thing just in front of your wife. What will she say? Xavier's hardly 1 or 2 months. And then got a call from Satya Sai. And there I worked for around quite a good time from 2004 to 17. That is 13 years in Satya Sai. That was a big, big, big transformational moment for me. From there, again, I got a call from Tapovan Vidyalaya as a CBSE principal. So that was again a blessing in disguise. And I said, oh, all right, let me go for it. Let me try. I got a good exposure as a CBSE principal. I did a lot over there. I learned a lot. It was a lot of give and take. You know, these TED Talks, Yeah, I correct. prepared my children, my students for TED, and there are still videos of Tapovan Vidyalaya with the TED students speaking there for around 3 to 3.5 minutes. Each video is there where they are speaking so fluently in English. That made me proud. You know, certificates and badges are of not of any use. When you see your children doing something, in that body, you Ritesh. Tapovan, my father was not keeping well. My father was here with me for last 3 years, and like I told you, I was the bhav there. Uh, God gave me a very good chance to take care of my dad, and for 3 years he was here with me. Finally, I lost him last May, 6th May. He passed away due to illness. But that was another, what you call, a shock for me. I didn't want him to go. You know, nobody wants. But God has his Yeah, plans. so Maybe sorry. he wants me to do something else. So I got associated with NGOs. I'm with the Aesthetics Women Organization working for women empowerment. I'm the district head of the Jamnagar district head of AICPW. Then Be the Change gave me another chance, and I became the state head of Be the Change, where we are working for self-reform to social reform. So first I have to bring change in myself, and then I can bring change in the society. So working for self-reform to social reform with the organization Be the Change. And not only that, I'm the national resource person who can go and take workshops at different places for Be the Change. And again, our aim for Be the Change is you have to first reform yourself and then You, reform the society. okay. So this was the journey. We can say beautiful, beautiful, ma'am. Really, कितने लोगों से आप मतलब रूबरू हुए, कितने सारे स्टूडेंट्स आपके जो आपका जो नॉलेज है वो उन्होंने गेन किया एंड एवरी स्कूल मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्कूल्स आई थिंक सो जर्नी ऑफ योर्स am I audible? Yes, you are audible.
Okay, okay. Yes, Ritesh, you Okay, so are now audible. let's come to current scenario, current situation here. Uh, we are having posts, or we can say uh, in the सोशल मीडिया पर जाएं, कहीं भी जाएं, न्यूज चैनल में जाएं, अभी एक ये मुद्दा कोरोना वाला चल ही रहा है। इन बिटवीन सबको मिल गया ये वाला फीस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। फीस की तो समझे बात चलो, बट अकॉर्डिंग टू यू, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, हर किस्म के स्टूडेंट्स आपके आपसे मतलब पढ़कर आगे निकले हैं। तो एज ए वी कैन से अ टीचर, हाउ हाउ डू यू लुक कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन एट द एज ऑफ वी कैन से 4 years 5 years, कहीं कहीं वहीं पर है, तो से लेकर कॉलेज तक, हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज वी कैन से सजेस्टेबल, ये अच्छा है, ये हो सकता है, और हाउ इट इज फ्यूचर गेनिंग वी कैन से लाइक दिस अकॉर्डिंग टू यू। जब हम छोटे थे ना, हम एक लेसन पढ़ते थे जिसमें सिर्फ रोबोट्स पढ़ाते थे। हमें नहीं पता था कि ये रियल में यही सिचुएशन आ जाएगी। और जब रियली कोविड के वजह से सब बंद हो गया, लॉकडाउन आ गया, एंड सडनली लाइक ओके नाउ यू ऑल हैव टू प्रिपेयर एंड बिकम ऑनलाइन एंड टीच द चिल्ड्रन। इट इज डिफिकल्ट, यू नो, इट इज नॉट सो इजी। बिकॉज मैं पढ़ा रही हूँ, आप मानोगे नहीं रितेश, teachers have got very abusive remarks from the students during this sessions. पहले तो वो बेचारी पढ़ा रही है, सामने आप हो नहीं, आप मेरे सामने ना, मैं आपको 2 झापड़ भी लगा दूँ, which is not allowed actually, but I can come on and pat your back, बेटा take care, look at me, what am I teaching you, just pay attention. That can be done when you are having face to face teaching. But when it becomes like on technology on a mobile, we all go on speaking and speaking and speaking, and the person in front, like, he may not even listen. बाजू में बच्चों का ध्यान उधर, आवाज आ रही है, आज तो मैंने छोले भटूरे बनाए, अरे यार ये क्या पढ़ा रही है, कब बंद करेगी। That is the feeling going on. They have been watching cartoons, they have been playing games on the mobile, on the same mobile, when you are giving them that चल अब तू इसमें पढ़ाई कर, तो कोई नहीं पढ़ेगा। It's very difficult, especially for the boarders. You imagine how will they like study, but teachers have done their best. They have बैठ के उन्होंने पहले सीखा कि को लेकर, नो आई ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अगेन इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन। तो इतनी सैलरी में करो, नहीं तो निकल जाओ। हुआ है, ये हुआ है in our own city, Jamnagar. Very sad state of mind. I can't do anything for them, but literally it is a very sad situation. Please, ठीक है, पेरेंट्स नहीं भर रहे, बड़े खुश हो रहे कि हम नहीं भरेंगे, बट क्या आपको दूसरे साइड की स्टोरी पता है? These corona warriors, they are literally corona warriors, my teachers, and they are suffering at the hands of the management. Literally, जब हमने कमाया, इफ आई एम द मैनेजमेंट, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, मैंने सब कुछ कर दिया, तब मैंने टीचर्स का नहीं सोचा कि ठीक है, मैं उनको इतनी पगार दे रही थी, जिनको 15,000 मिल रहा था सीधा 10,000 पे कर दिया, जिनको 20,000 मिल रहा था 15,000 पे कर लिया। Those who are paying very high just brought them to 50%. वेरी सैड सिचुएशन। वो तो करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे? किसी का होम लोन है, किसी का कुछ है, किसी का व्हीकल लोन है, they have to pay the loans, they will have to work. It's a very sad situation for the teachers, literally it is very sad. एक पूरा ग्रुप है शिक्षकों का, एक ग्रुप है जिन्होंने मुझे ऐड किया एज एन एडमिन, सो आई एम गोइंग ऑन, उनमें पॉजिटिविटी भरने की कोशिश करती रहती हूँ। वी हैव टू थिंक ऑफ सम सोल्यूशन, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द होल थिंग, बट दे आर सेइंग मैम यू हाउ विल वी इन्फ्लुएंस द, लेट अस साइन पेटिशंस। ऐसे कर लोगे, क्या मिल जाएगा तुम लोग को?
इट इज नॉट, इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ माइंड। इस वक्त टीचर्स को अगर कोई जाके उनको पूछे ना, उन लोग की हालत बहुत ही खराब है, लिटरली वेरी बैड। Yeah. I've seen people working, like my daughter, she's working in a school, and I've seen how the teachers are. She's not having any main subject, but the teachers who have the main subjects, I've seen them how they are working with it. My own sister, I'll give you an example. Like she had to make these PPTs, and she never knew how to make a PPT. Like Mm. she called my daughter, okay, beta, now how do I do it? And this and that. She took 5 to 6 days to make one PPT. Finally, she made it, and now she's making 2 PPTs per day, presentations to those little years old. This situation has arisen, and I don't know, government should think something about the students, about the teachers, about the parents also, because parents को दिख रहा है बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम फीस नहीं पे करेंगे, राइट? टीचर्स बेचारी मेहनत कर रही है, वो लोग को पढ़ाना ही है क्योंकि उनको अपनी पगार चाहिए। This is the situation. And management wants the admissions. They don't want to lose the admissions. Even they are helpless. They are saying that हमें फीस दो। Okay. तो अब किसके कहीं ऊपर पर हम ब्लेम डालें? I heard और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि स्कूल मैनेजमेंट जो भी पुराने वाले स्कूल हैं कि they are earning from, we can say, couple of years, many of the years, they are not पूरी सैलरी दो क्या बोले आप? हेलो हाँ जी, I didn't hear you for some time. The voice was gone. नेट हमेशा मैडम इंटरनेट हमेशा धोखा देता है हो जाता है। Okay, am I audible now? Yeah, you are audible now. Okay, so that was the point बीच में अपना कन्वर्सेशन कट हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आई हर्ड तो इज इट नॉट पॉसिबल कि 2-4 महीने टीचर्स को संभाल ले जो इतने सालों से बाहर काम कर रहे हैं इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या बोले आप? उनको संभाल ले मतलब 50% सैलरी तो कम है बट 80 to 90% या अकॉर्डिंग टू समथिंग कुछ उसका 20 का टीचर्स को They should think. Now, who will raise a voice? How will the voice be heard? That is a very bad situation क्योंकि school owners, they are all united. They have their own, पूरा ग्रुप है उन लोग का और बहुत अच्छे से उनका पूरा मैनेज हो रहा है ग्रुप, जबरदस्त। तो the person who is like ये भी है कि समझा रहा है अच्छे से, अभी मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ, मैं उस ग्रुप का नाम नहीं दे रहा हूँ, तो उसमें सुबह से ऑलमोस्ट एक ही बात पे चल रहा है कि फीस भरनी है नहीं भरेंगे बोल रहे भरेंगे। तो आई गॉट अ स्क्रीनशॉट कि
स्कूल में से कोई मेल आया है, उसमें बताया कि भाई तो ये भी बात उनकी सही है ना कि अगर आपको फीस भरनी है तो आपके बच्चे को अगर पढ़ाना भी है तो why you are not paying? If you are capable, if you are strictly capable हो वही बात है ना, पेरेंट्स को अभी ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हु इज गेटिंग स्लैश, whose salary is getting slashed, what it is affecting, how it is affecting the teachers who are going to teach your child. थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, तभी ये बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी. You won't imagine, I had put up a suicide awareness post. अगर आपने FB पे पढ़ा हो कि I am there to hear you. You can come to me. My kitchen is always open. We'll have a cup of coffee. We will talk over. Don't think of any critical situation. You first come and have a talk with me. So around 150 or 180 people liked it. 100 commented on it. This, that, everything. One person is saying I'm in a very critical situation. I got a heart attack. मैंने कहा हे भगवान, ये मेरे से पहले बात कर ले, इससे पहले कि ये बंदा मतलब कुछ गलत करे. मैंने फटाफट ढूंढा, उसका कहीं से WhatsApp नंबर मिला. I contacted him. I said what happened? He's a principal in a school and he said he has been kicked out of the job for 3 months. He has not paid the rent of his house and he is wanting कि उसको कहीं नौकरी मिल जाए. People have been kicked out of their jobs. टीचर्स को भले उन्होंने आधी सैलरी दी है, प्रिंसिपल्स को तो सैलरीज भी नहीं मिल रही है. आई डोंट नो अबाउट जामनगर. दिस प्रिंसिपल इज आउट ऑफ जामनगर. तो I felt very bad. I said, now what are you planning? He said, I am thinking कि मैं भी जाके suicide करूँ. मैंने कहा नहीं, it is not the way out. आप अपने बच्चों का सोचो, अपनी बीवी का सोचो. Your parents must be there. He is in another city, another part of the country, and he is a native of Gujarat. Ahmedabad का वो बंदा है. So I felt very bad. I just went on to check all my contacts and all. तो एक मुझे अहमदाबाद में मिला. Do you want to work in Ahmedabad? He said yes. मैंने फटाफट उसको भेजा. मैंने कहा please try and get this job and just start working. So people are thinking, people are getting scared of the living because ऐसी situation आ गई है. बहुत बहुत खराब situation है. I just pray he gets a job. हाँ, अरे बट आपने बहुत ही एक छोटा सा आपका जो स्टेप था ना, शायद उसकी जिंदगी बदल देगा एंड ही वुड बी लविंग हिज लाइफ फर्दरली. और उसके लिए पता नहीं, यू आर लाइक अ गॉड. आपके लिए सही में भगवान है. तो उनको रोक तो लिया, बस उनको जॉब मिले ना मिले कुछ भी हो, बट someone must be there to say you that you're another. पता नहीं, छोटे होते एक हमेशा एक मेरे दिमाग में आता था, जैसे उस समय ना मिस्टर इंडिया आई थी. मैंने कहा ये मिस्टर इंडिया यार कहीं भी पहुंच जाता है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो तो कितना अच्छा ना, मैं कितने लोगों की मदद कर सकती हूँ. आई डोंट नो, आई गॉट दैट फीलिंग वन. स्टिल कुछ तो मिल जाए मुझे कि मैं छुप छुप के कहीं पे पहुंच जाऊँ, या सुपरमैन या स्पाइडरमैन जैसा कहीं पहुंच के किसी की हेल्प कर पाऊँ. आई डोंट नो, वी शुड हैव सम सुपर हीरोज इन द वर्ल्ड की आके कोई किसी की मदद कर जाए लिटरली. नो मैम, आप बात सही है, बट यू ऑल आर सुपर हीरोज फॉर एवरीवन. टीचर्स है आर सुपर हीरोज ओनली ना. I don't know. We try. Teachers try our best. We want that positivity. बच्चा आए हंसते हंसते जाए हंसते हंसते, यही हमारा होता है मोटो ऑफ द डे. कि भाई उसको मतलब हम अपना ही बच्चा समझते हैं. यू वांट, एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ. मेरे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जिनको साइंस लेना था, एंड आई वाज टीचिंग सोशल्स देन. मैम ये इकोनॉमिक्स कितना बोरिंग है, हमको तो चाहिए ही नहीं. अब ये 10th में हम पढ़ के करेंगे क्या उस पे, ये LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन.
मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, यू लव सॉन्ग्स ना, दे लव सॉन्ग्स, बिकॉज वो लोग मुझे बोलते थे एक चैप्टर खत्म होना तो हमें एक अंताक्षरी का पीरियड दे देना, तो वी वुड एंजॉय अंताक्षरी. So I said, okay, let's fit this LPG into one of your favorite songs. तो पहले तो हमने इतने बड़ी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो उसमें ढूंढना भी इजी नहीं है कि सबकी अलग अलग पसंद होती है. फाइनली वी लॉक वन सॉन्ग, वो मैम अब आपने आइडिया, हमें तो पता नहीं आप कैसे करने वाले हो. तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. आप लोगों को तो ये अच्छा ही नहीं लगता है, अब आपको ये अच्छा लगे तो उसके लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ खिचड़ी तो पकानी पड़ेगी. तो दे ऑल आर लुकिंग एट मी, ये क्या करने वाली है. तो मैंने शुरू किया. लिबरलाइजेशन को देखा तो जाना सनम, इसके बिना न गुजारा सनम, उस पे प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी, ग्लोबलाइजेशन भी जरूरी. एंड दे वर लाइक, ओह वाओ मैम, हमको इसकी में डेफिनेशन भी याद करा दो. तो लाइक टीचर्स ना, दे ट्राई कि भाई इन बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं कि इनको मजा आ जाए और ये लोग घर जाके लेके जाए कि यस वी हैव डन समथिंग. तो या टीचर्स in one way are superheroes. Super. Yeah. Super. And ma'am, you are one of them. One of them. नहीं नहीं, आई एम जस्ट अ स्मॉल बीइंग. आई टोल्ड यू ना, मुझे बस वो जमीन में ही रहने दो, मुझे हवा में पता. आई वांट टू बी लाइक अ ट्री, यू नो. ट्रीज, दे हैव देयर पॉजिटिविटी. आप एक पेड़ के नीचे जाओ, आपको बहुत सारी छाया मिलती है. आपको ट्रीज फल देते हैं, फ्लावर्स देते हैं. एंड यू नो व्हेन देयर आर बैड टाइम्स, जब पूरे पतझड़ में वो पूरे विदर हो जाते हैं और उनके जो पत्ते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, मतलब आखिरी दम तक आई वांट कि भगवान मुझे ऐसा, मतलब आप बनाना कि आई वांट टू बी यूजफुल टिल द एंड ऑफ माय लाइफ. आई वांट टू बी लाइक अ ट्री. Super, super. Okay. तो this was Pavneet ma'am with us. बहुत सारी बातें हैं, टाइम बहुत कम पड़ेगा. तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहे अबाउट चिल्ड्रन, online studies and everything you want to share or share a message to everyone. Share a message with the parents on children, you mean to say? हाँ. मतलब how should you mean a closing note for everyone? according to the situation. हाँ, like that. For all the parents, मैडम आपके teachers, तो मेरे ये एक मैसेज नहीं है, एक गाना है जो मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहा है. एंड इट इज अ मैसेज, अ नोट फॉर एवरीवन इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन. चाहे वो एक आम काम, घर पे काम करने वाला बंदा हो से लेके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उन सभी के लिए ये है. तो जिंदा है तो जिंदगी की ये गम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन. That's it. Thank you. Jai Hind. Take care, Ritesh. God bless you. Bye. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, everyone. Good night, ma'am. Dilse thanks and good night. Good night.